तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल. Yes, sir. We can start now. Very fine. Okay. Uh, Good evening, all boys and girls. Welcome to our live session. Now, before I start taking on your questions, I would like to make say a few words. You see, thing is that uh, this selection system, when it started working, there were no coaching academies. I mean, मुर्गी अंडे वाली अगर कहानी लें तो डेफिनेटली जो है सिलेक्शन सिस्टम पहले स्टार्ट हुआ, कोचिंग एकेडमी बाद में आई. और सिलेक्शन में जो था, सिलेक्ट हुए लोग, तब भी सिलेक्ट होते थे. सिलेक्शन क्राइटेरिया ये था कि ओवरऑल जो कॉम्पिटेंट थे लोग वो सिलेक्ट हो गए और जो नहीं थे वो सिलेक्ट नहीं हो रहे थे. सिलेक्शन के क्राइटेरिया में आज भी कोई चेंज नहीं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड that the criteria for selection which existed when the selection system, when the first person got selected till date in 2023 have remained unchanged. That is an individual who meets the overall competence criteria for being selected gets selected, and the person who does not meet the criteria for selection will not get selected. This has the following implication: that while learning manipulative techniques, which are promoted by various coaching academies, websites, and all that, you cannot get selected. I can assure you, somebody who has worked himself or herself as a psychologist in the selection system, if that person or another person who's some double PhD in psychology, who's written books in psychology and all that, who knows these things thoroughly, can select and assess candidates, if he or she does not meet the criteria of getting selected, will not get selected by the SSB. तो जो टेक्निक है कि सेंटेंसेस में ये कर दो, कहानियों में ये कर दो, स्टैंड आउट, ये हाई लेवल स्टोरीज एंड ऑल दैट, इन चीजों से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता. सिलेक्शन तभी होगा जब आप ओवरऑल सिलेक्शन के लायक होंगे. इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए. एंड दिस इज द बेसिक प्रमाइस ऑन विच नो फ्रिल्स एकेडमी वर्क्स, कि मेरे पास कोई गुरु मंत्र नहीं है. एसएसबी की तैयारी कुछ भी नहीं होती, तैयारी जिंदगी की होती है. अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में कॉम्पिटेंट हैं तो वही सैंपल आपका एसएसबी में निकल कर आएगा, और अगर आप कॉम्पिटेंट नहीं हैं तो वही सैंपल निकल कर एसएसबी में आएगा और आप सेलेक्ट या रिजेक्ट होंगे. विद दिस बेसिक टॉक, I am ready to take on your questions. Who's first to start? One by one, please raise your hand. अर्श कॉल भाई, आपका नाम भी ए से और डबल ए है आपके नाम पे. Yeah, please unmute and let me see your face also, and then I'll answer you. And incidentally, you know, Nehru's are also calls to start with. Yes. So, Kanu, I would like to show my face, but the thing is, in Noida, light nahi hai, so that's a... कोई बात नहीं, बिना शक्ल देखे ही बात बन जाएगी. Not to worry. I can hear you. Go ahead, ask your question. So, like, what's the process for a newcomer? Like, I'm completely new to this SSB training thing. So, working professional होने की वजह से, I don't, जहाँ पे भी मैंने पूछा तो they always say कि मतलब 14 दिन का 15 दिन का कोर्स कर लो. That's not possible for me. So, ये ऑनलाइन गाइडेंस मेरे को पता चला कि सिर्फ मतलब chosen few देते हैं, तो उस वजह से I was inclined towards this meeting. So for a newcomer, for completely someone who's fresh, तो कैसे, how would you go about, like what's the road map? अच्छा, हमारा नो फ्रिल्स एकेडमी का क्या फंक्शनिंग है? तो बेटा अर्श, क्या है, नो फ्रिल्स एकेडमी का फंक्शनिंग ऐसा है कि फर्स्ट थिंग इज यू विल फिल अप एन इलैबोरेट फॉर्म
which is quite similar to the PIQ form which aspirant fill up for the SS. It is little more elaborate. उसके बाद में जो है आपको इंटरव्यू का अपॉइंटमेंट मिलेगा. आई विल इंटरव्यू यू, आई विल असेस यू, एंड अनलाइक इन द SSB वेयर you don't get to know असेसमेंट का रिजल्ट क्या है टिल फाइनली यू गेट टू नो कि सेलेक्ट हुए या नहीं हुए. यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि बेटा आपकी ये चीजें जो है पर्सनालिटी के एस्पेक्ट ठीक ठाक हैं और यहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है. एंड कंसिडरिंग योर लाइफस्टाइल, योर एज एंड योर टाइम अवेलेबल इन लाइफ, द डेली रूटीन एंड ऑल दैट, उसके हिसाब से मैं आपको एक रोड मैप सजेस्ट करूं. उस रोड मैप के बेसिस पे आप जो है अपना एक इंडिविजुअल अपना प्लान बनाते हैं कि भाई ये रूटीन जो है मेरे लिए ठीक ठाक होगा. उसको जो है मैं वेट करता हूं कि ये सूटेबल है कि नहीं है. आपने प्रायोरिटीज ठीक ली हैं, आपने वेटेजेस ठीक एलोकेट की हैं, क्योंकि मेरे पास तजुर्बा है इन चीजों का. उसके बेसिस पे हम आपका रूटीन फॉर्मुलेट करते हैं जिस पर आप वर्क करते रहते हैं, और हम वीकली इंटरेक्शन करते रहते हैं, आपसे फीडबैक लेते रहते हैं कि भाई प्रोग्रेस कैसी चल रही है, और आपकी क्वेरी जो उठती रहती है दिमाग में उनको हम क्लैरिफाई करते रहते हैं. इस हिसाब से हम काम करते हैं. फिर हमने ग्रुप्स क्रिएट किए हुए हैं नो फ्रिल्स एकेडमी में, जहां पे ग्रुप एक्टिविटीज आप करते रहते हैं. जैसे कि सिलेक्शन में स्टेज 1 में एक PPDT होता है, उसका हम रेगुलर सेशंस करते रहते हैं. उसमें आप स्टोरी लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, डिस्कस करते हैं ग्रुप में, तो वो आपको उसकी थोड़ी आदत उसकी पड़ जाती है. GD हो गई, लेक्चरेट हो गया, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हुई, जो जो चीजें ग्रुप लेवल पे आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप या जूम सेशंस में कर सकते हैं, वो हम इस तरह से करते हैं. GTO के भी हम जो है हमने 3D मॉडल शॉडल्स बना रखे हैं, उसके बेसिस में आप लोग डिस्कस करके इन चीजों पे आप प्रोग्रेस करें. मोटा मोटा प्लॉट ये है. एक हमारी बुक है आपको मिलती है, द प्रैक्टिकल गाइड टू बिकम एन ऑफिसर. उसमें आपकी जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के उसमें एसेस दिए हुए हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जा सकता है. पहले तो हम यही समझाते हैं कि हु एम आई, यही आंसर मिल जाएगा मैं हूं कौन. क्योंकि इस सवाल का जवाब आसान नहीं होता देना. मैं आपसे अगर पूछूंगा आप कौन हो तो आप सोचने लग जाओगे, मैं ही खुद ही सोचने लग जाऊंगा कि भाई नेहरू है कौन. तो इट इज लाइक दैट. तो हमने चीजें ये समझाई हुई हैं, और SSB की जो मिसकंसेप्शंस होते हैं उनको हमने सेटल किया हुआ है अपनी बुक में. फिटनेस के ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है. मेरे ख्याल से शायद फिटनेस के ऊपर कोई SSB वाला बातचीत नहीं करता मेरे अलावा. तो वो है, उसमें पूरा फिटनेस गाइड दिया हुआ है, और उसमें मैं आपको पूरा एडवाइस देता हूँ. रेगुलर इंटरेक्शन में हमारे स्टूडेंट 30-30 किलो तक घटा पाए हैं और सेलेक्ट हुए हैं फिटनेस वगैरह अपनी इंप्रूव करके. तो मोटा मोटा तो ये है यार. और कोई सवाल होता आप पूछिए. तो एक और सवाल था कि मतलब इज दिस कम्प्लीटली ऑनलाइन कि बीच बीच में आ सकते हैं मेरिट? देखिए क्या है कंप्लीटली ऑनलाइन, पर मेरठ आने से बिल्कुल कोई रुकावट नहीं है. पर मैं जनरली, आप नोएडा में है, जी सर. तो नोएडा में है तो हाँ, एक आध बार तो आ ही जाओ, मुझसे मिलने आ जाना मेरठ में. मैं अभी तो खैर वैंकूवर में बैठा हूँ, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आ जाऊंगा. और हमारा प्लान ये है कि अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक वगैरह तक हम कुछ जो है GTO टास्क नहीं बोलेंगे, जो कि फिटनेस और कॉन्फिडेंस रिलेटेड जो ऑब्स्टिकल्स हैं जिसकी दिक्कत स्टूडेंट्स को पड़ती है, वो हमारे दिमाग में अपना फॉर्मुलेटेड प्लान है, उनको भी हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे. जिससे रस्सी वस्सी चढ़ने की भी आप जब आओ तो मुझसे मिलने हाथ मिलाओ तो रस्सी भी चढ़ लेना. तो इस तरह की चीजें जो है हम क्रिएट कर लेंगे. कई हाइट से कॉन्फिडेंस की लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो हम क्रिएट कर लेंगे. इस तरह की चीजें जो हमने आइडेंटिफाई की हुई हैं, तो डबल फायदा हो जाएगा आपको. क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि इंडिविजुअल का टाइम वेस्ट ना हो. और आज की डेट में सोसाइटी बड़ा टाइम वेस्ट कर रही है, और आपकी जनरेशन तो बड़ा टाइम वेस्ट करती है. ये ओवर थिंकिंग की टर्म जो है ना, कि घर बैठो और कुछ नहीं सोचते रहो. अब क्या सोचते हो कि नो फायदेमंद चीजें नहीं है, इससे एक्शन किया जाए. तो दैट इज अ थिंग. बाकी तो कोई कष्ट नहीं आई है, मिलिए बिल्कुल. ठीक है सर. तो व्हाट है. सर ये जो जैसा कि आपने कहा था कि मतलब यू विल फॉर्मुलेट अ प्लान एंड एवरीथिंग,
तो दिस विल कम नहीं, आफ्टर इसमें द इसमें एक पॉइंट मैं डालूंगा। मैं आपको एक रोड मैप सजेस्ट करता हूं, प्लान आप खुद बनाते हो, क्योंकि आपके इम्प्रूवमेंट में मैं आपको रेलेवेंट रखना चाहता हूं, क्योंकि आपकी रेलेवेंस बहुत ज्यादा है उसमें। मैंने बॉक्सर्स भी जब ट्रेन किए हुए हैं, मैं 1983 से बॉक्सर्स ट्रेन कर रहा हूं, तो मैं इंडिविजुअल को बताता था कि भाई देख, तेरी ये एंड्योरेंस में कमी है या स्पीड में कमी है, ये चीजें हैं, अब तू खुद देख भाई क्या करना है, क्योंकि रिंग में जाके तो तुमने लड़ना है ना भाई। एसएसबी आपने फेस करना है, मैंने नहीं करना। तो मैं एक जो स्कूल और कॉलेज का मास्टर जी वाला अप्रोच होता है ना, वो अप्रोच नहीं रखता। आप समझ रहे हो बात मेरी? मैं आपको हिस्सेदार बनाता हूं अपनी आपकी प्लान में, मैं अप्रूव करता हूं उसको, प्लान आपकी बनी हुई होगी। आ रही बात समझ में? आ रही है। तो जैसा कि हाँ, ये ये सब आपने कहा, तो ये इंडिविजुअल गाइडेंस प्रोग्राम में आता है ना सारा, इंडिविजुअल गाइडेंस, 1 ईयर? बिल्कुल। आप नहीं, 1 ईयर लीजिए या 3 महीने लीजिए, हम वैसे ही टाइम की रेस्ट्रिक्शन नहीं रखते। अभी मेरे स्टूडेंट से बात हुई, वो एनडीए के लिए मेरे पास आया था, और अब जो है वो एसएससी टेक में रेकमेंड हुआ 3 साल के बाद। ही स्टिल माय स्टूडेंट। Okay, sir. Very specific to SSP right now. Sir, when they ask you question in the conference, what does those questions signify? Because I was asked a question that uh, you point apart from you, who would you recommend up from your group? So I answered that I am not the right person to answer this question because I don't have the criteria for your test. So he again pushed me, my interviewer in the conference, he pushed me to give some names, but still I warded off this question. I thought I should not I should not answer this question as if I am questioning the process. So Okay, what should I have done right? okay. I was Himanshu, confused out. okay, fine. Himanshu, my first advice to you is that do not try to look for gundis in life. Try Look to for be gundis means what do you go? What is अच्छा, the बात घुमाना. no. बात घुमाना नहीं. What do you call? Can anybody give me a good phrase for gundi? Because I'm not coming up with an English word. A catch. Okay. Don't look for catches unnecessarily. Don't be overly suspicious. It is a pretty straightforward question, and it has got hardly any bearing on your selection or rejection. Okay. Because any questions in the conference, if they are asked, which are related to deciding whether you should be selected or not, or there is some queries to be settled among the assessors, then they will pose a situation to you that in this situation, what would you do? Right. So these, how was your stay? How many friends you made? Who you think will get selected? In which technique you felt you performed best? These are very routine kind of questions which actually signify nothing. Okay. Fine. So my advice to you would be that you should give an honest answer. If I And no, I'm not finished. If you felt somebody was fit for selection, you should have said so. Or who you felt was the best in your group, you should have said so. If you felt that you are the most suitable person to be selected, then also you should have said so. okay, sir. Fine. So I have answered your first question. Yes, sir. Yeah, go ahead Because with your next question. okay, but in the interview, I am a stock trader. I have applied for TA. Okay. So what in the interview, interviewer kept insisting me that why don't you take others' money to trade and why don't you start a business like this? But I kept answering that I don't want to do it because it's a question of money and I don't want people to. I'm not ready to convince. It will take a lot of time for me to convince others because it's a case of money. Either I will go for the hedge fund to trade with their money or I am not ready.
I don't think it's a viable business because it is most of the cheating scam that are going on. So I don't want to be a part of that or convincing unnecessarily or invest my energy where it requires a lot of convincing. But he kept me insisting this question twice or thrice, I don't remember. So what does it signify? I don't really get his point in that. No, once again, you see, one should you're looking for a lot of catches in life. Don't do that. Okay. You give your straight answer. You see, it's like this, I'll give you my example. When the interviewing officer, almost he had finished with the interview, he said, okay, supposing I don't select you this time, will you come again? So I said, sir, I will not come again for SSB now. So he said, age-wise, so you can come. I said, sir, but but now I'm getting an opportunity not to do 12. And once I finish my 12th, then I have other agenda. I'll go and study in Delhi University. And I propose to play tennis for India, and I'll be pursuing my tennis career very seriously. So if I can get selected for India now, then it's okay. Otherwise, no. So he said that that shows that your motivation is not much for the defense forces. Then I was taken aback. I said, what he's saying is correct. Motivation is high. Nahi. I said, sir, my motivation is that much that from Meerut I have come to Bhopal for this SSB. If I'm cleared, I'll join. So are you getting my point? Yes, yes, sir. I was not looking for any catches. I just gave straight answers, what were, correct from my perspective. So that is the line of thinking which I advise that you should follow. Don't look for catches. Give your straight answer. That's it. If he answer, if he keeps asking you the same question again and again, it doesn't matter. Your answer should still remain the same. Like now also, so many students keep repetitively asking me if the government policies, there are certain things which are not okay about it. Should we be critical in SSB about it? So I keep telling them what you feel as per your conscience is not correct. You should say so. But they are having this doubt that if they are critical of government policies, then they will not be selected. So they keep asking me this question again and again. I keep giving them the same answer. Are you getting my point, Himanshu? The next question is more of a confirmation from you. Like in GTO, there is no competition. You just have to do what you are supposed to do as a part of group. There is no competition. You don't have to stand out of. Is it? Absolutely correct. I am thinking on the right line, sir. Because You are absolutely thinking on the right lines. The team should do well. That's it. That's it. I just have to play my part because in the last SSB that I gave, I felt that I went a little aggressive because I wanted to prove my point. Because it is like weighing your argument and your friends in that GD. So you can lose an argument and win the friend. Well, your point is absolutely valid that you should be an effective team member. However, what kind of argument and all that we'll have to see. Like probably if it's in a group planning exercise, if the group is trying to take up a line of action which is not sensible, then you should not agree to it. Sir, one point I would like to add here is that, sir, in the group planning exercise only, what happened is that the person who stood up and narrated the story, he said, "We'll defuse the bomb." So immediately, what came out of my mind, it was just my sudden reaction that this was not decided in the group. Why are you defusing the bomb? We don't have the capability. I just said it. So was it negative from my end for the GTO, or was it correct from my end? Because I don't know. Himanshu, I can understand. We have a very defensive mindset built up in our society. You know very well that in practical real life, you would have been posed in the situation as some group of students and all that. You have no bloody business of going and trying to defuse any bomb shop and all that. You're not competent to do any such thing. You may end up blowing all of you up. That is the Yes, reality.
So what you said was absolutely correct, and you should never have agreed to this. Even Okay, if sir. all of them were jumping that this is the best thing to do, including the GTO. You should not agree even then. Okay, sir. Everybody said that you shouldn't have said this. The person sitting next to me just pushed me up with his knee, elbow, and said you shouldn't have said that. So I got a little nervous about that. So Himanshu, I have one counter argument to that, and that is, our very respected Chief Justice Karju, he once made a statement that 90% of Indians are idiots. Okay. So this is something you can now tell this chap. What you said was absolutely correct. Okay, sir. Yeah, it's a practical thing. You have to visualize that you have to actually do it. You can't do this thing, yeah. If yes, I thought I should put myself into the situation and what would I have done in that particular situation with what Absolutely. capability I have. You are It should be you the are solution. you are absolutely right. And if you read my book, I have written about this Rambo kind of thing which people do. All bullshit. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. And one more question, sir. Yeah. In IO in interview, the Go ahead. interview I've that not is heard you. okay. You should not lie about anything. You have to be very very frank. What you can say to your father, you should say that in the interview. Yes. Right, sir? You should not lie about what you have, because the past is past, and if you have improved over it, because in the interview that I had for the TAPIB interview, he said I have changed my profession number of times. Right, Okay. I was working with Infosys, then I changed, then I started a startup, then I closed that startup, and then I moved to stock trading. So he said you are not very stable. So I just immediately said, sir, I don't look it as from a stable point of view. I look it as a flexibility point of view. That wherever I see an opportunity better than the last one, I switch to that. Makes sense. Right, sir? Am I thinking on the right lines about the SSB? I feel so. SSB is only about life. It is not divorced from life. Yes, sir. What makes sense practically in real life should make sense in SSB also. कोई अलग तो इनकी थोड़ी है. Fine. It means that conference में भी जो अगर वो पूछ रहे हैं तो उसका सही जवाब देना. You should not ward up the questions. You should give. Don't get. I'm saying do not get hassled. You say what you feel is correct. If the entire world feels otherwise, how does it matter to you? You're convinced that what you're saying is correct. You stand by it. That's it. Okay, sir. Yeah. That is why I said if not only your entire group felt that you should defuse the bomb, if the GTO Major Saab had also said that you should defuse the bomb, you should still not agree. Are you getting the point? Yes, sir, I'm getting it. Yeah, Himanshu, I had a situation where, we were having an operational discussion, and I was a colonel, I was commanding battalion. And in the operational discussion, we were doing some offensive operation, and I said I will do in this manner and all that. And the general the GOC, Major General Saab, he felt that some people who should be leading the offensive should be engineers personnel from the engineer regiment, because they are better trained in handling explosives and such like stuff. So I said, sir, you may be thinking that way, but if you choose me to lead the offensive operation and 23 Punjab is going to do the job, I am not going to use any engineer personnel. They will be only behind in a guiding role. My offensive would be led by the 23 Punjab people and not engineers,
because I will trust the people whom I have trained and lived with throughout my life. Right, sir. So he said, that's your point of view. I said, they're fine. So that's what it is. If you think that 23 Punjab should lead, then be assured कि ये engineer regiment जो मद्रास वाले हैं वो very good people. I got nothing against them. But offensive में आपकी सलाह मैं नहीं लूंगा, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा. उन्होंने बोला ठीक है भाई, तुम अपने हिसाब से कर लेना. So have you got my point? Yes, I got your point. You Yeah, should so stick. just if some that time if the army chief had come and said कि no you this is incorrect and all, I would have said then आप किसी और से करा लो. अगर आपके पास लॉजिक है, then you should stick with your point. If you have तो the लॉजिक logic. है ना मेरे पास. हाँ, तो लॉजिक ही है बस. That's it. जय हिंद सर, गुड इवनिंग. जय हिंद and good evening. एक्चुअली सर क्या हुआ था ना, एक्चुअली आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन नाउ, और रिसेंटली मैं गया था कलकत्ता में, जो नेवी का होता है सियालदा गया था, ठीक है. तो आई गॉट स्क्रीन आउट. लेकिन जो पहले दिन में ही मैं इतना डीमोटिवेटेड हो गया, क्योंकि उससे थोड़ा रिपीटर्स थे, तो उनका एक हो गया कि मतलब उनका एक ग्रुप बन गया. तो फिर जब स्क्रीन आउट होके मैं आया, तो आई जस्ट थिंक कि रिपीटर्स मतलब क्या, अगर वो मतलब 5-10 SSB दिए हैं और उनका थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस या नॉलेज होगा, लेकिन अगर हम फ्रेशर्स एक बार स्क्रीन आउट होकर भी अगर हम वो स्किल सेट 3 महीने में डेवलप कर सकते हैं, तो हम भी, ऐसा नहीं कि हमें अगर मतलब ऐसे लोग बोलते हैं कि SSB मतलब 8-10 बार जाना ही पड़ेगा. क्योंकि क्या हुआ ना, मैं जिस दिन गया था हमारा एक भी बंदा कोई भी रिकवर नहीं हुआ, मतलब पूरा 50 वॉकआउट हो गया बैच. तो तब से आके फिर मैं एफकेट देने का सोचा था, मैं इतना डिमोटिवेटेड हो गया कि मैं पूरा सोचने लगा कि एक तो एसएसबी तो 8-10 बार जाना पड़ेगा, बैकअप के लिए तो आई शुड प्रिपेयर फॉर एमबीए. तो तब से मैं कंफ्यूज होकर ये सब सोच रहा हूँ हमेशा. आई थॉट कि आई वांट टू आल्सो जॉइन योर एकेडमी. तो दैट इज द रीजन. मैंने कुछ बताइए, ऐसा होता है क्या कुछ भी कि लोग बोलते हैं कि रिपीटर्स मतलब वो सिलेक्ट होंगे, रिपीटर्स अगर ज्यादा है तुम्हारा होगा ही नहीं. बट मुझे लगा कि अगर हम भी कोई वो स्किल सेट कम टाइम में डेवलप कर सकते हैं, मे बी वो जनरल नॉलेज हो या फिजिकल फिटनेस हो, तो हमारा भी ऐसा नहीं कि हमेशा 8-10 चांस में ही होगा, वो 2-3 में भी हो सकता है. ओके, विभास 2-3 नहीं, एक बार ही काफी होती है. जी सर. ठीक है ना. तो ये मेरा भी एक बार में ही सिलेक्शन हो गया था. और मेरे साथ ही हमारे टाइम में, अब तो अलग अलग कर दिया है, हमारे टाइम में तो रिपीटर्स और फ्रेशर साथ साथ चलते थे. ठीक. जी सर. तो हमारे साथ में जो था, रिपीटर्स जो थे उनमें से कोई भी रेकमेंड नहीं हुआ था. और लेकिन एक हम होता है ना कभी कभार कि मतलब वहाँ का पहला दिन कुछ कुछ ऐसा होता है बैठ के बात करने का तरीका, कि कभी कभार जो हम फ्रेशर्स पहली बार जाते हैं कि थोड़ा लगता है कि डिमोटिवेटेड. ये होता है सर. ये तो बातचीत लोग करते ही है ना. आप एक मुंशी प्रेमचंद की किताब, वो कहानी है बड़ी मशहूर, बड़े भाई. तो बड़े भाई 7वीं या 8वीं क्लास में फेल होते रहते थे. तो वो छोटे भाई को कहते थे कि अरे अभी तो ठीक है, जब तुम 8वीं में आओगे तब पता चलेगा असली के क्या होता है. और नेचुरली छोटे भाई फिर क्रॉस करके आगे निकल के बड़े भाई 8वीं क्लास में ही फंसे रहे. तो ये तो लोग बातें करते रहते हैं, उसमें कोई दम नहीं है. उसेन बोल्ट जब पहली बार ओलंपिक दौड़ने गया था, तो उसने सबको ही हरा ही दिया था ना. जी जी तो जी. हाँ, और वो 22 साल का ही था. तो उसमें क्या है. तो देर इज नो प्रॉब्लम ऑन ऑल दीज थिंग. ये मिसकंसेप्शन सोसाइटी क्रिएट करती है, आप उन चक्करों में बिल्कुल ना पड़े. आप अपनी जो है बेसिक कैपेबिलिटीज हैं उन पे फोकस करें, उन्हें इंप्रूव करें. वो ही क्राइटेरिया है सिलेक्शन का. एसएसबी का तजुर्बा कोई क्राइटेरिया नहीं है. ये कहीं कहीं क्वालिटी में दिया हुआ है, या आपको 100 मीटर की रेस में कहीं क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आपने 25 रेस दौड़ी हुई हो. आप पहली रेस में भी जीत सकते हैं ना. जी सर. बेसिक तो तो स्पीड है ना लेकिन आपकी. सर, लेकिन एक एक बैच में एक बार एसटीपी में होता है कि पूरा बैच मतलब 200 बच्चे गए हो, 50 या फिर 60 बच्चे गए, उसमें से एक भी रिकमेंड नहीं हुआ. तो उस केस में तो थोड़ा मतलब ये सच है कि प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम रहता है ऐसे में, क्योंकि जनरली सिलेक्शन रेट भी तो कम है. तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट रीजन इट मे गेट डिलेड. बट ऐसा नहीं है कि मतलब आपको ज्यादा चांस लगेंगे ही लगेंगे. आप इन चीजों में, विभास, इन चक्करों में मत पड़ो. आप फोकस अपनी कॉम्पिटेंस पे रखो.
आप अपने को काबिल बनाओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोगों की बातों पे बड़ा ध्यान दे रहे हो, लोगों की बातों में दम नहीं है भाई, ठीक बात नहीं कर रहे। डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको थोड़ा जो है कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, थोड़ी क्लैरिटी की भी कमी है, आप हमारा गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन करें, ठीक? तो उसमें जी समझे, सर। हमारी बुक समझे, मेरे से इंटरेक्शन होगा, और जैसे जैसे आप रेगुलरली हम इंटरेक्ट करते रहेंगे, आपकी जो है ये क्लैरिटी ज्यादा आएगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और बात बनेगी। बट प्रोवाइडेड, बट इंपॉर्टेंट है बहुत, आपको सिंसियर एफर्ट करना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई तरीका है नहीं। जी सर। हाँ, दाएं बाएं की बातों से कान करो बंद, या इधर से सुनो उधर से निकालो, फोकस रख के अपना इंप्रूवमेंट करो, वो करना पड़ेगा, वो आपको सेलेक्ट कराएगा। जी सर। I'll या just interact with the ma'am after the session is over यस about यस, the मोस्ट means. वेलकम विवास, मोस्ट वेलकम। ठीक है बेटा? Yes sir. Thank you sir. ओके Nice देन, talking to you. सेम हेयर बेटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस। So my name is Rahul. I'm from Mysore, Karnataka. या Sir, the thing is, I just graduated this year. ओके Right now, I'm not working on anything. I'm just focusing on CDS. ओके। So I'm just worried that would it be better to give my all effort on CDS, or at the same time do something else and prepare also? My advice in general, Rahul, is that all of us must start working at the earliest. Yes, sir. Are you an engineering graduate? Yes, sir. Okay, fine. So then it makes sense for you to start working. You should be able to clear the written examinations of CDS and AFCAT while you're working. It should not be a serious problem. These examinations are not that difficult. Yes. And in case you cannot clear them while you're working, that means overall you are not good enough. It's as simple as that. So you should be able to clear these exams. So my advice to you would be to take up work, and there is nothing like SSB preparation. Please take my word for it. These Yes. coaching academies, websites, and all have filled the minds of the youth with junk. If you are overall competent in your life, in the profession, in your core subjects, then you are fit for selection. That's all what is needed. Okay. Fine. So focus, take on a job. Fine. First, now these examinations are coming up, they're just round the bend. Yes, sir. So for the time being, do well in these written examinations. As soon as you are done with it, take up a job straight away. Okay. Pick up a job, start working, and Karnataka, you are near the IT city. So Yes, sir. preferably take up a job in the IT. Though there Yeah. also jobs are reducing, but it is the easiest, line to get work in. And it's a line which has got a lot of growth scope. Yes, So sir. get on with it, get on to work, make a sensible routine in which you can devote reasonable time to your physical fitness, general awareness, and all that, which you should do as a good citizen in any case. Yeah. Do that, and things should work out.